Okay, so next topic that we want to discuss in this session is related to discrete time Fourier transform. And it's normally abbreviated as DTFT. So from continuous time Fourier transform, now we are shifting to discrete time Fourier transform. But the idea behind discrete time Fourier transform is exactly similar to continuous time Fourier transform. And just to refresh your memory, what was the concept behind CTFT? So we already know that for a periodic signal, we have Fourier series. And Fourier series help us to represent any given periodic signal in terms of a basic signal, and that basic signal is complex exponential signal. So then we also found that even if signal is not periodic, we can still represent it in terms of complex exponential signal. And the basic concept that we used was, we considered that if signal is periodic with a finite period, then it will have a standard Fourier series representation. And then if we start increasing the period of the signal, so this signal whose period is increasing, but if period is still finite, it will have Fourier series. But in the limit, when period becomes so high that it approaches to infinity, then we can say that theoretically, this is a periodic signal with infinite period, but practically, this signal is now non-periodic. And then we saw that under period approaching to infinity, the Fourier series becomes Fourier transform. This was the idea. Now we are going to use the similar concept for discrete time signal as well. So if signal is periodic in discrete time, then we know that it has a Fourier series, and that Fourier series is known as discrete time Fourier series. So for periodic discrete time signal x of n, we have discrete time Fourier series representation. And what are the two equations? So x of n this is how we can represent the given periodic signal in terms of complex exponential signal. N is the fundamental period. And the Fourier coefficients, the equation that we can use to find out the Fourier coefficient is like this.
So again, this is the synthesis equation and this is the analysis equation. This is something that we have already covered. And this is what we call as discrete time series. Now, what we want to do is, if given periodic signal is not periodic, then is it possible that we can represent it in terms of exponential signal? So now the question is how to represent aperiodic signal x of n in terms of exponential signal. And we can answer this question in a similar manner. What we will do is we will start with a periodic signal. We will increase its period, and then we will see what happened to discrete time Fourier series. When we make period so large that it becomes infinity, under this limit, discrete time Fourier series will become discrete time Fourier transform. So right now we are interested what is the mathematical form of discrete time Fourier transform. So we already know about discrete time Fourier series, which consists of these two equations. So we will see what will happen to this representation. So this is periodic signal, and it can be represented like this in terms of this exponential signal. But what if this signal is not periodic? We will see what happened to this equation. Okay. So we will start with this particular signal. In a similar manner, when I started talking about continuous time Fourier transform, I consider an example signal that we considered, and then we derive the corresponding representation. So the first signal that is drawn in this figure A. So this is our aperiodic signal. So you can see that this signal is not repeating itself. It is 0 until n becomes minus n1, then it is non-zero. It is non-zero up to this time interval, and after this it is 0. So it is a finite duration signal. So one thing that you can see that it is a finite duration signal, and it is non-periodic or aperiodic. And we want to see, or we want to find a representation if a signal like this, again, this is any random signal, it is just a generalized signal that I consider. But the point is it is aperiodic. And what we want to do is, I want to find out how to represent it in terms of exponential signals. How to represent it as a linear combination of exponential signals. So what we will do, we will convert this non-periodic signal into periodic signal. So in figure B, we have another signal represented as x hat n. So this is x hat. And if you look at this signal, it is the same signal, this one, but now it is repeating itself with this period. And you can see that it is repeating itself. So what is this signal is periodic
version of x of n. And we can also say that our considered aperiodic signal is one period of the signal. So if you consider one period, so of course this is n, but because of symmetric nature, यहाँ पे आपके पास let's say minus n/2 होगा और यहाँ पे कहीं plus n/2 होगा. So this is one period of the signal. ठीक, यहाँ से लेकर इसको आप कह सकते हैं कि one period है इसका. And you can see that जो हमारा सिग्नल है ये इसके one period के बराबर है. What we will do now is, अब जो सिग्नल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो पीरियोडिक है. अगर ये पीरियोडिक है तो इसका मतलब है कि इसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे. और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो पीरियड हमने कंसीडर किया हुआ है n, इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे. तो इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन कि हमारा जो अपीरियोडिक सिग्नल है इसकी जो सिमिलैरिटी है इस सिग्नल के साथ, इट विल बी मोर फॉर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n. इस वक्त अगर हम कहें कि ये हमारा सिग्नल सिर्फ इस इंटरवल में इसके बराबर है, लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड बढ़ता जाएगा तो ये जो इंटरवल जो है इंक्रीज होता जाएगा, जिसमें हमारा गिवन सिग्नल और ये जो पीरियोडिक सिग्नल है उनकी सिमिलरिटी ज़्यादा टाइम तक के लिए होगी. और जब आखिर में हम पीरियड को इनफाइनाइट कर देंगे तो फिर ये जो हमारा सिग्नल होगा पीरियोडिक सिग्नल और ये जो सिग्नल होगा, दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर. So this is what we are going to do now. Okay. So we can represent x of n and we can represent x of n in discrete time Fourier series representation. और वो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगी जो अभी मैंने लिखी थी, अब मैं इसको x of head of n के लिए कहूँगा. सो आई विल से is equal to coefficients over capital N number of values e raised to power j k 2 pi by capital N into small n. और फोरियर कोफिशिएंट्स वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उनकी इक्वेशन ये हो जाएगी 1 over n summation over capital N number of values e power minus j k 2 pi by capital N. Now the point is, since this signal is equal to x of n over one period, तो ये जो हम समेशन ले रहे हैं, समेशन हमने लेनी है ओवर कैपिटल n नंबर ऑफ वैल्यूज, और n जो है ये पीरियड है. सो इट डजंट मैटर कि हम कौन सा पीरियड कंसीडर करें, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस सिग्नल को हम अगर ओवर वन पीरियड हमने समेशन करनी है तो मैं यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक भी कर सकता हूँ, फिर n से लेकर 2n की रेंज में भी कर सकता हूँ, -n से 0 की रेंज में भी कर सकता हूँ. ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्टेबल. बट क्योंकि मैं इसको इस सिग्नल के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, आई विल कंसिडर दिस इंटरवल एज वन पीरियड. यहाँ से हम इसको समेशन करें ताकि इसमें
ये वाली वैल्यूज आ जाए जिसमें ये सिग्नल नॉन जीरो, ठीक हो। सो फोरियर कोफिशिएंट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। सो ओवर वन पीरियड, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इस सिग्नल की जगह एक्स ऑफ एन भी लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज द पॉइंट कि इस इक्वेशन में इसकी जगह मैंने ये लिख, एंड देन जो पीरियड मैंने कंसिडर किया हुआ है उसके वैल्यूज को अगर आप देखें, तो मैं अगर इसको -n1 से +n1 की रेंज में समेशन करूंगा इसकी, रीजन क्या है कि इस इंटरवल से बाहर तो ये जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज हमें सम अप करनी, ठीक। सो दैट इज वाई -n1 से, सॉरी यहाँ पे मैंने +n2 लिखना है। नाउ इवन अगर मैं इस समेशन इंटरवल को इस तरह लिख दूं, -infinity to +infinity, it is not going to make any difference on the result. रीजन क्या है, इस इंटरवल के बाहर ये सिग्नल जो है जीरो है। इवन मैं यहाँ पे -infinity to +infinity लिख रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ इसके लिए आएंगी, आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल आंसर जीरो ही आएगा। सो इवन मैं अगर इसको इस तरह भी लिख दूं, आई विल स्टिल गेट द सेम Fourier कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वी कैन नाउ डिफाइन अ फंक्शन, इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी विल से इट इज फंक्शन ऑफ e raised to power j ओमेगा। और इसको हम कंसीडर करेंगे किसके बराबर है, ये है x of n, where n is from -infinity to +infinity, e power -j ओमेगा। इस फंक्शन को अगर आप देखें और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है इसको देखें आप, इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज फंक्शन ऑफ दिस कंटिन्यूअस वेरिएबल ओमेगा, ये आपको ओमेगा नजर आ रहा है, और हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें आपको नजर आ रहा है कि वी हैव दिस k times 2 pi by k time 2 pi by। also you need to remember कि ओमेगा नॉट हमने यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल N को हम ओमेगा नॉट भी कह सकते हैं। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि देयर इज k टाइम्स ओमेगा। सो वी कैन से दैट कि अगर इस फंक्शन को हम एवेलुएट करें, ओमेगा की जगह k ओमेगा नॉट पुट करेंगे, तो एग्जैक्टली हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। सो लेट मी मेक अ स्टेटमेंट। हम फोरियर कोफिशिएंट्स के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, because of this result we will say that ek are proportional to samples of x of e j omega। जो कंटिन्यूअस वो वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर, इसमें आप जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो k टाइम ओमेगा नॉट पुट कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर k जो है वो एक इंटीजर है, तो आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। तो ये आप एज इफ
कि आप इसको सैंपल कर रहे हैं फॉर दिस वैल्यूज। सो इसका मतलब ये है कि फोरियर कोफिशिएंट की जो इक्वेशन है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय n, इस पूरे समेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किस चीज के साथ, कैपिटल X एवोल्यूएटेड एट j k omega naught. So this is one expression that I was interested in deriving. So Fourier coefficients को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि यहाँ पे जो फोरियर सीरीज मैंने लिखी थी इसके लिए, इसमें फोरियर कोफिशिएंट a k को अब मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। So Fourier series for periodic signal, उसमें हम फोरियर कोफिशिएंट a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/n कैपिटल X evaluated at k omega naught e to power j k omega naught into n, और you all know कि ये आपके पास over n. What I have done is, यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो आपके पास 2 पाई बाई कैपिटल n है, इसको आप अगर ओमेगा नॉट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ई जे के ओमेगा नॉट n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नाउ ओमेगा नॉट को हमने किसकी जगह लिखा हुआ है, 2 पाई बाई n की जगह लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई की जगह 1 बाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है 1/n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम इसको अब लिख देंगे। सो x at n is equal to back is this one, इसकी जगह हम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये 1/2 पाई जो है वो मैं समेशन के बाहर लिख दूंगा, 1/2 पाई, और ओमेगा को मैं समेशन के अंदर। सो 1/2 pi factor is taken outside of the summation operator, और हमारे पास within summation operator क्या होगा, e j k omega naught, then we have e to the power j k omega n, and then we have omega. Now this is the representation of this periodic signal. ये जो हमने periodic version बनाया था, हमारा जो ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसका पीरियोडिक वर्जन जब हमने बनाया उसकी फोरियर सीरीज मैंने इस वक्त लिखी हुई है आपके सामने। Now let's see what will happen to this representation जब हम इसका पीरियड बढ़ाएंगे तो what is going to happen. So I will say as n increases, omega naught decreases because of the inverse relationship between period and frequency. और जब आपके पास n को इंक्रीज करते करते इंफिनिटी तक हम ले जाएं, so what will happen? It's obvious कि ओमेगा नॉट इज सो स्मॉल कि अब इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिस्क्रीट नेचर है वो खत्म हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, एक तो समेशन ऑपरेटर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
एंड वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो आपके पास सिग्नल है, जिसको हम बेसिक सिग्नल पे देख चुके हैं, ये सिग्नल जो है ये पीरियोडिक, और इसका जो पीरियड है वो हमेशा 2 पाई के बराबर हो। किसी भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जिनमें हमें डिफरेंट सिग्नल मिल सकता है, वो 2 पाई के बराबर। इस केस में अगर आप देखें के को जो समेशन हम कर रहे हैं ओवर एन वैल्यूज कर रहे हैं, सो जब हम के को ओवर एन वैल्यूज वेरी करेंगे तो हमारे पास जो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा जो रेंज होगी वो 2 पाई के बराबर। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द राइट साइड, मैं लिख रहा हूँ समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये जो आपके पास फंक्शन है कैपिटल एक्स, जिसको हमने लिखा हुआ है के ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट इतना स्मॉल हो जाएगा कि ये अब कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा एक्स ऑफ ई जे ओमेगा हो जाएगा। इसी तरीके से के ओमेगा नॉट ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल बन जाएगा, जिसको हम ओमेगा कह देते हैं, और डी ओमेगा नॉट को हम रिप्लेस कर देते हैं विद इंक्रीमेंटल वैल्यू ओमेगा, जिसको डी ओमेगा, और इसकी इंटरवल इंटीग्रेशन इंटरवल क्या होगी, 2 पाई हो जाएगी। ऑल्सो जब एन अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा, सो फिर एक्स हैट एन जो है एक्स ऑफ एन के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज। तो लेफ्ट साइड पे एक्स हैट एन की जगह हम लिख देंगे एक्स ऑफ एन। नाउ ये जो रिजल्ट हमारे पास डिराइव हमने कर लिया, दिस, और दूसरी जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है दिस वन, these two equations form a part जिसको आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो नाउ जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे थे, सो एनी aperiodic signal in discrete time can be represented as, so x of n जो हमारा कोई भी aperiodic सिग्नल हो सकता है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, दिस इज द इक्वेशन। तो यू कैन सी दैट जो हमारा गिवन सिग्नल है इसको हमने इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल रिप्रेजेंट कर दिया। सो व्हाट इज दिस थिंग, ये फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज है, ये इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर मुझे कोई डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल गिवन हो और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने फाइंड करना हो, तो फिर कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, so these are two equations जिनको हम discrete time Fourier transform। again एनालिसिस और
सिंथेसिस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे सिंथेसिस इक्वेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे एनालिसिस इक्वेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। One important conclusion before I finish today's lecture is कि ये जो डिस्क्रीट टाइम अपीरियोडिक सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक हो, विद पीरियड इक्वल टू 2π। इन कंट्रास्ट अगर मैं इसको कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ कंपेयर करूं, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको मैं यहाँ लिख भी लेता हूं, जब हमने किसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो, जिसके लिए हमने ये नोटेशन यूज की थी, या इसको आप एक्स ऑफ ओमेगा भी कह सकते हैं, ये हमने कैसे फाइंड किया था, इसको हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया था ई पावर माइनस जे ओमेगा टी के साथ, और फिर इसको इंटीग्रेट किया था। तो अगर इस सिग्नल की, इस फंक्शन की मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज नॉट पीरियोडिक इन नेचर। लेकिन जब हम डिस्क्रीट सिग्नल की हम बात करते हैं जो कि ए पीरियोडिक सिग्नल है, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ पीरियड 2π। अगेन इसको हम इस तरह लिखने का मकसद ये है कि इसको आप 0 to 2π भी कर सकते हैं, इसको आप -π to +π भी कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज, और यू नीड टू मेक श्योर के विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा जो इंटरवल जिसमें आपने इसको इंटीग्रेट करना है वो 2π के बराबर। वाई वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग इट ओवर अ पीरियड मोर देन 2π, क्योंकि ये सिग्नल पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2π है। सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट this function is available within this interval. So that is one important difference जिसका later next lecture में जब हम इसको कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे DTFT की और इसकी प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे, वहां पे भी आप देखेंगे कि हम कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसके लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं, वी विल सी कि इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं और डिससिमिलैरिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिससिमिलैरिटी वो ये है कि आपके पास ये नॉन पीरियोडिक होगा हमेशा, और ये जो होगा हमेशा पीरियोडिक। That's it for today's lecture. If you have any questions, so आप पूछ सकते हैं, otherwise I'm going to finish today's lecture. Any question?